Hello everyone, my name is Madhumita. Welcome back. Winter season is here. I am super excited. You know what? Winter season means winter holidays, Christmas holidays, New Year holidays. And in this winter season, I am going to Shimla. ठंडी ठंडी बर्फ है, मस्त मस्त मौसम है, गरम गरम खाना है, गरम गरम मैगी है, गरम गरम चाय है, गरम गरम समोसे है, बहुत मजा आने वाला है। वाओ, हम शिमला पहुंच गए। पता है मेरे पास खाने के लिए क्या क्या चीजें हैं। मैगी मैगी हम सबको पसंद है। मैगी खाऊंगी और बस भूल जाऊंगी। पता है मैंने शिमला में बहुत शॉपिंग किया है। प्लास्टिक का शॉपिंग कैसे होगा? मैं सामान कहाँ पर रखूंगी, कैसे लेके आऊंगी, क्या करूंगी? प्लास्टिक तो यूज होगा बट मुझे अभी कोई यूज नहीं है। अरे यार प्यास तो लगेगा यार, टूरिस्ट है, सब पानी तो पीऊंगी। अब ये वाटर में पानी पी के हो गया है, अब इसका मैं क्या फेंक देती हूँ। क्या फर्क पड़ता है? क्या अभी ये भी पानी पी के हो गया, इसको भी फेंक देती हूँ। पानी पी के हो गया, फेंक ही देती हूँ इनको। अभी तो पानी तो पी चुके हैं हम, क्या कर सकते हैं? फेंक देते हैं। बट लुक एट द वेदर गाइस, इट इज सो ब्यूटीफुल। ये क्या चल रहा है? तुम इतनी सारी चीजें वेस्ट क्यों कर रही हो? तुमको समझ में नहीं आता? तुम टूरिस्ट हो, मैं समझ रही हूँ, तुम ट्रिप पर आई हो और तुम ये सारी चीजें फेंके जा रही हो, वेस्ट करते जा रही हो। तुमको समझ में नहीं आता? तुमको दिखाई नहीं दे रहा? There is so much of plastic pollution that you are creating. You are such an educated person, such a well-aware person, and तुम इतना सारा waste create कर रही हो। I'm so sorry. It's not that I don't have values. I definitely have values and I do care for our Mother Earth. I was so happy for the trip, so excited for the trip. Finally, winter season was here. I just got lost into it. But now, I am so much aware and I have read so much about how we as individuals can stop plastic pollution. So, instead of having my oats packet, my Maggie packet, I just threw the wrappers down. I can just collect the wrappers back and collect all the amount of plastic that I have and dispose it in the correct way so that different products can be made out of plastic. And one more thing that we can do is, instead of using multiple plastic containers, we can use our own Indian style tiffin boxes. जी हाँ, हमारी मम्मियाँ, हमारे दादाजी, नानाजी, सब लोग टिफिन बॉक्स के जमाने से खाना लेके जाते थे, तो हम आज क्यों नहीं लेके जाते हैं? Why do we always go for disposable containers, lightweight containers? Do you know a normal tiffin box can keep your food more warm than a plastic container? So let's get back to our containers, our actual Indian tiffin boxes. And आपने तो देखा ही होगा मेरी इन बॉटल का प्रॉब्लम। मैंने इतने सारे बॉटल्स यूज किए, but guys, I mean, you just saw I was carrying so many water bottles on my trip, and one water bottle was not sufficient. So let's use these flasks and such steel water bottle, flask water bottle, because first point, they are very big. It's sufficient for one day, and winters are here, and it's such an amazing place, and you need that warm water during your trip. So replace your plastic water bottles with this. And chai, हम टपरी में जाते हैं, चाय पीते हैं उस प्लास्टिक के कप्स में। टेस्ट उतना आता होगा या नहीं आता होगा, I'm not very sure. But let's get back to our basics, guys. Let's use our actual chai cups. एक चाय कप and आप हर जगह जाके चाय पी सकते हैं, चाय enjoy कर सकते हैं, and save from plastic pollution, and please dispose plastics correctly. And सबसे important, ये plastic bags. I know this is so silly, but we should definitely avoid using plastic bags. I think that's the most easiest way to reduce plastic pollution. So let's try our cotton bags. Cotton bags are more sturdy, they have more strength, and you can fit more things. These kinds of cotton bags or these kinds of cotton bags. And in eBay, we just got an amazing travel bag. आपको लिखने में लगा कि कितना छोटा है? नहीं guys, let's look at it, guys, just look at it. It is a full-size travel bag. So these are my ways on how I am focusing as an individual to reduce plastic waste and to curb plastic pollution. So guys, now you understood how you as an individual can contribute to stop plastic pollution. Now I'm going to tell you some industrial methods of how plastic pollution is being stopped. Do you know plastic waste can be turned into plastic tiles? I mean, this is amazing. And waste plastic can be converted into fuel by plastic pyrolysis. And at the end, you can also make plastic into bricks. Guys, did you all know these things? So our entire world is trying to stop plastic pollution. आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अकेला प्लास्टिक सेव करके क्या कर सकता हूँ? Guys, if one person does, yeah, it would make a small difference. But each one of us will combine together and work towards this particular thought. It will make a huge difference. So guys, let's come together and make this world a better living world and stop plastic pollution. This is Madhumita signing off. Hope you like my video.